how are you? Welcome to M is equal to M Maths by Mohit Bhagat. Yes, friends. Chapter number 1, relation and function. Just we completed the question number 1 to 7 and exercise number 1.1. So let me start from the exercise number 1.1. Continue question number 8. Okay. So what is given that in question number 8? Question number 8 it is given that show that the relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by. That is a one relation on set A. This is question number 8. On set A. In set A that is 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 something, right? Then what is relation R? Relation R is given that A comma B such that mode of A minus B is even. That is given that. Okay, when A and B both are taken from the set A. So now you have to prove that is an equivalence relation. So yes, we know that. What is the equivalence relation? Equivalence relation, that means it must be a reflexive, symmetric and transitive. Okay, so now for reflexive, we know that A belongs to R होना चाहिए. So for that, B is replaced by A. Okay, so this is mode of A minus A, which is equal to 0. Is it A minus B is even? A minus A is equal to 0. It is even. 0 is even? Yes, is even. So we can say that this A is belongs to R. For every A belongs to capital A. Then, so that's why R is reflexive relation. R is reflexive relation. Okay. Now go for the next. Go for the symmetric. Symmetric के लिए क्या था? AB belongs to R. That implies BA belongs to R. Okay. So now what happened? AB belongs to R. We accept it. That is AB belongs to R. That is accepted. That means what is the relation between A and B? That is mode of A minus B is even. Now what can we do? A is replaced by B and B is replaced by A. So that's why it is B minus A. It is modulus. So there is nothing changed. Minus बाहर आएगा ये modulus है इसलिए which is even. So we can say that BA is belongs to R. So therefore R is symmetric relation. R is symmetric relation. Okay. Now next, third one is what? Transitive. So for that, first of all, what can we do? We write down for transitive we accept two things. AB belongs to R and BC belongs to R. इसका मतलब क्या होगा? AB belongs to R का मतलब है mode of A minus B is even. And BC का क्या होगा? Mode of B minus C is even. Now we require what? We require AC. AB, BC तो क्या चाहिए? AC belongs to R चाहिए. तो उसका मतलब मुझे क्या लाना पड़ेगा? Mode of A minus C is even लाना पड़ेगा. ठीक है? अब A minus B is even, B minus C is even. इसका मॉडुलस even है. सपोज मैं ऐसा लिख देता हूँ even का मतलब it is a multiple of 2, like it is 2m. Mode of A minus B is 2m and mode of B minus T is equal to 2n. So mode निकाल देते हैं तो A minus B is equal to plus or minus 2m and B minus C is equal to plus or minus 2n. Now we require what? A minus C. So here this one is 2m यानी multiple of 2 and this is even number. This is also the even number. Now sum of these two even number A minus B plus B minus C, which is equal to plus or minus 2m plus or minus 2n. Got it? So B cut. So it is A minus C is equal to plus or minus 2 common. It is m plus n. If this m plus n is considered say one more number, one constant say p, it is plus or minus 2p, where p is equal to m plus n.
दैट मीन्स प्लस और माइनस हटाना हो तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ मोड ऑफ a माइनस c इज इक्वल टू 2p। प्लस और माइनस के बाद ये सामने मोड ले लिया, उसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ a माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इट इज even number, it is even, so we can say that AC belongs to R, so therefore R is transitive. So here what can we prove? R is a reflexive, R is a symmetric, and R is a transitive, so we can say that R is a equivalence relation. R is a equivalence relation. Got it? Simple task. Okay. Next, उसमें ही पार्ट में उसी क्वेश्चन में क्या करना है? Show that all the elements of set 1, 3, 5 are related to each other. Okay. That is a one set A1. A1 is equal to 1, 3, 5. All the elements of this set A1 are related to each other with this relation. This is the relation. What is the relation? Subtraction of any two is even. So now when the subtraction is even, कोई भी दो नंबर का subtraction even का होगा, तो आप सोच सकते हो कि जब दोनों even होते हैं, जैसे 4 minus 2, it is 2 होगा। दो नंबर अगर इवन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन इवन होगा, अगर दो नंबर ऑड होते हैं तो भी सब्ट्रैक्शन इवन ही आएगा। सपोज 5 minus 3 and it is also 2. The subtraction of both are even number, then answer is even, and subtraction of both are odd numbers, then answer is an even number. Okay, but one odd, one even, so there is not as any possibility for the subtraction is becomes even. Okay, तो यहाँ पे A1 सेट में कौन से नंबर्स दिए हुए 1, 3 and 5? तो we know that A minus B be even only when A and B both are either even or odd. Either it is both are even or odd. Both are even or odd. So here in set A1 all numbers are odd. All numbers are odd. So if AB, for every AB belongs to capital A1, that implies mode of A minus B is always even. So therefore we can say that all elements of set 1, 3, 5 are related to each other. Okay, same as if A2 is equal to, here we have even 2 and 4, so all elements are what? Even. So here all elements are even. So what happened? So we write down once again all elements are even. So for every AB belongs to A2, that implies mode of A minus B is even. So therefore all elements of A2 are related to each other.
each other. Okay, but उसमें अभी नेक्स्ट दिया हुआ है, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 and 4. तो यहाँ पे अब रिलेशन किसके साथ चाहिए, एक A1 और A2 के बीच में रिलेशन होगा, A1 के एलिमेंट और A2 के एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होगा कि नहीं वो हमें देखना है. So for that what can we do? So subtraction is even. Subtraction is even when it's possible, if both are even or both are odd. आपको किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए, A1 and A2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. Is that relation possible are between A and B? Suppose यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 और A2. समझ लीजिए, लिखना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे. सॉरी, A1 में 1 3 5 है, A2 में 2 and 4 है. Is there any relation R between A1 and A2 is possible? अगर आप 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, इट इज ऑड नंबर. 1 and 4 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी ऑड नंबर, बिकॉज A1 में से एक एलिमेंट लेना है और A2 में से एक एलिमेंट लेना है. तो एक ऑड है एक इवन है, तो दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन मस्ट बी, इट इज अ ऑड नंबर. इवन कभी होगा ही नहीं. So therefore what happen, subtraction is never becomes even, it is always odd. Okay, so that's why there is no relation between A1 and A2, element of A1 and A2. So here elements of 1 3 5 are odd and elements of 2 4 are even. So their subtraction, that means for every A belongs to capital A1 and B belongs to capital A2, that implies A minus B is odd. So therefore A1 and A2 are not related to each other. Okay, just we explain it. इसमें odd है, इसमें even है. एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करना है. तो सब्ट्रैक्शन never becomes even because one is odd, one is even. तो सब्ट्रैक्शन is always odd. हमें क्या चाहिए रिलेशन में, even सब्ट्रैक्शन चाहिए, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है. That's why there is no element of A1 and A2 are related to each other. This is your question number 8. Okay. Next question number 9. Show that each of the following relation are in the set A where x belongs to z, 0 less than or equal to x less than or equal to 12 given by. In an equivalence relation है, ऐसा हमें प्रूव करना है. So this is question number 9. On the set A is equal to x such that x belongs to z such that 0 less than or equal to x less than or equal to 12. So these are the 0, 1, 2, 3 up to 12. Okay, this is set A. Now first one is relation R. What is given that A comma B such that mod of A minus B is multiple of 4. Okay, so let's start. Multiple of 4 divisible by 4, ऐसा कुछ भी दिया होगा. चलिए तो पहले इसको प्रूव करते हैं. व्हाट इज दिस? इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव. दैट्स व्हाई इट इज अ इक्विवेलेंस होगा. तो पहले रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या करेंगे? यस बच्चों, क्या याद है हमें? b के बदले a पुट अप करना है. तो इन द कंडीशन mod of a minus a which is equal to 0 which is multiple of 4. It is multiple of 4. Okay, therefore we can say that a belongs to R. For every small a belongs to given set capital A. उसका मतलब क्या हो गया?
R is a reflexive relation. Got it? Okay. So next, it is for symmetric. Now AB belongs to R. The meaning is mode of A minus B is multiple of 4. उसका मतलब अब सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? A B के बदले B है, that is B is replaced by A and A is replaced by B. That's why in this case, if we put A is replaced by B, it is B minus A, which is also multiple of 4. So we can say that this is BA must be belongs to R. So we can say that R is a symmetric relation. Okay. Now for transitive, we can say that say AB belongs to R, BC belongs to R. We accept it. Okay. Now AB belongs to R. That implies what can we say? That mode of A minus B is multiple of 4. And B minus C, BC belongs to R का मतलब mode of B minus C is multiple of 4. Okay. अब मोड निकाल देंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 तो रहेगा, प्लस और माइनस आएगा, इन शॉर्ट मल्टीपल ऑफ 4 तो रहेगा ही. सो A minus B is multiple of 4 and here it is same as B minus C is मल्टीपल ऑफ 4. अब एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेते हैं. किसी भी कोई भी एक नंबर बोलो जो मल्टीपल ऑफ 4 हो, दैट इज 60, और दूसरा एक नंबर बोल दो व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 4, इट इज 20. अब इन दोनों का एडिशन कर दो, दैट इज 36, व्हिच इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4. तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं तो वो A minus B plus B minus C is multiple of 4. So B cut. That's why it is A minus C is multiple of 4. Okay. So now mode of A minus C, mode ले लेंगे तो भी वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4. तो उसका मतलब क्या हो गया? This is AC belongs to R. So R is a transitive relation. So R is symmetric, reflexive, R is symmetric and R is transitive. So therefore we can say that R is equivalence relation. That's it. Okay. Now next topic उसमें क्या पूछा हुआ है? Find the set of all elements relating to 1 in each case. So now you have to find out the element of R1. Find the set of all elements related to 1 in each case. तो 1 के साथ रिलेट करता हो ऐसे, यहां से आपको एलिमेंट निकालने जो 1 के साथ रिलेट करता हो. कौन सा रिलेशन? A और B में से एक नंबर आपको दे दिया है. सपोज A इज इक्वल टू, सपोज B इज इक्वल टू 1 दिया है मान लो. तो A and B के बीच में रिलेशन क्या है? जिसका मॉड्यूलस ऑफ सब्ट्रैक्शन A minus B is multiple of 4. तो B इज इक्वल टू सपोज 1 दे दिया है, तो मोड ऑफ A minus B is multiple of 4 होना चाहिए. तो आपको ऐसे सेट निकालने हैं. ठीक है. तो सेट AP which is equal to X, where X and P belongs to R, where X is also taken from the set A. अब आपको P की वैल्यू क्या बोली हुई है? 1 के रिलेट करते हो ऐसे एलिमेंट निकाल रहे हैं. 1 के साथ जो रिलेशन हो ऐसे एलिमेंट निकाल रहे हैं. तो X where X, 1 is belongs to R, where X belongs to A. इसका मतलब क्या हो गया? X where X1 belongs to R का मतलब क्या होगा? ये B है तो क्या होता है? A minus B is multiple of 4. Here mode of X minus 1 is multiple of 4, where X belongs to A.
तो चलिए बोलिए x की वैल्यू क्या लेते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। तो अगर x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो 1 minus 1 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी x की वैल्यू 1 ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ कि if x is equal to 1, if x equal to 1, that implies mod of 1 minus 1 is equal to 0 is multiple of 4, is multiple of 4। अब दूसरी वैल्यू जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4, 8, 12, 16 ऐसा कुछ होता हो, तो x की वैल्यू क्या लो, ठीक है 5 ले सकते हैं। तो mod of 5 minus 1 is equal to 4 which is multiple of 4। वैसे ही x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 5 के बाद 9 ले सकते हैं। अगर 9 ले लिया तो 9 minus 1 which is equal to 8 which is multiple of 4। और 9 के बाद 4 क्या लेंगे, और 4 पे 13। अगर हम 13 लेते हैं तो 13 minus 1 12 हो जाएगा। ओके, तो 13 minus 1 12 होगा which is multiple of 4। लेकिन x की वैल्यू हम 13 ले सकते हैं, हाँ या ना, नहीं ले सकते, बिकॉज x भी कहाँ से लेना है, सेट a में से लेना है, और a में क्या है अप टू 12 तक है, तो इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आएगी। therefore a1 को कंसिस्ट करते हो, वैसे कौन कौन से रिलेटेड 1 के साथ रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 5, 9, and this one is also known as the equivalence class। equivalence class भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ये इक्विवेलेंस क्लास क्यों है कि इसके बीच में ये जो एलिमेंट है उसके कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लो तो उसके बीच में ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। कोई भी दो एलिमेंट ले लो उसका सब्ट्रैक्शन 1 and 5 तो mod of 1 minus 5 is a multiple of 4, 1 and 9 तो mod of 1 minus 9 is multiple of 4, and 5 and 9 लोगे तो 5 minus 9 is also multiple of 4। ओके, दैट मींस ये जो इक्विवेलेंस क्लास यानी क्या हुआ, ये जो पूरा सेट था उसमें से एक हमने सेट सबसेट निकाला, ये पूरे सेट ए में से कुछ ऐसे एलिमेंट निकाले कि जो रिलेशन आर को कंटिन्यू करते हो, जिसमें रिलेशन आर सैटिस्फाइड होता है, वैसे सेट बनाया, एंड दिस सेट इज नोन एज द इक्विवेलेंस क्लास। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ पार्ट 2 पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, second part it is capital R is equal to A comma B where A is equal to B। टोटल एक 2 में सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। it is second part it is capital R is equal to A comma B where A is equal to B। सिंपल टास्क दिया हुआ है। so now for the reflection में क्या करेंगे, reflection में क्या करेंगे, A is equal to A, yes बोल सकते हैं, which is always true, which is always true। so therefore for every AA belongs to R, for every A belongs to capital A, उसका मतलब R is reflexive relation। okay, now symmetric के लिए क्या करोगे, AB belongs to R, that implies A is equal to B, तो B equal to AB लिख सकते हैं। That implies what can we say, that BA belongs to R। so therefore R is symmetric relation। यहाँ पे हो गया बच्चों। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, दो एक्सेप्ट करोगे, AB belongs to R, BC belongs to R। AB belongs to R का मतलब A equal to B, BC belongs to R का मतलब B equal to C। so that implies what can we say, that A equal to C, डायरेक्टली we can say that A equals to C। उसका मतलब क्या हो गया, A and C वो दोनों रिलेटेड एक दूसरे के साथ, उसका मतलब R is transitive relation। तो R is reflexive, R is symmetric, R is transitive, therefore we can say that R is equivalence relation। okay, now once again we have to find out the set of all elements
रिलेटेड टू वन इन ईच कंडीशन, इसमें भी क्या करना है, वन के साथ रिलेटेड हो वैसे एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो जो भी लिखना है यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम टू सेम सेट AP इज इक्वल टू x where x and p is belongs to R। अगर x कहाँ से लेना है, सेट A में से लेना है। अब p की वैल्यू 1 दी हुई है, तो x where x, 1 belongs to R, x belongs to A। तो ऐसा x निकालो जहाँ पे x1 1, जैसे a एंड b के लिए क्या था, a इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू a में से कौन सी लोगे, इक्वल टू 1 हो, तो इटसेल्फ 1 इटसेल्फ भी आएगा, x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 मिल गया। तो दिस इज a1 रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए, दिस इज नोन एज द इक्विवेलेंस क्लास। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 is completed, which will let next question number 10. Now question number 10. Question number 10, given the example of a relation which is first symmetric but neither reflexive nor transitive, that means आपको 5 यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आपको क्या करना है, एग्जांपल्स देने हैं जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ऐसे बहुत सारे 5 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप ये इजीली कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है, तो आप इजीली उसको देख के वॉच करके कर सकते हो। तो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 11 इज द IMP क्वेश्चन। Show that the relation R in the set A of point in plane given by, what is the relation R on which set, set A of point of a plane? So this is question number 11. Question number 11, that is a set A. It is nothing but the points of a plane. Points in a plane. यानी points of plane XY. XY प्लेन की बात करना है इसमें, ठीक है। XY प्लेन जो ये प्लेन में जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट की बात करनी है। उसमें रिलेशन R कैसे दिया हुआ है, PQ where distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। तो ये जो लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, दैट इज P and Q such that क्या दिया हुआ है, distance of point P from the origin is equal to the distance of point Q from the origin। तो origin से P का distance क्या होता है, P, this is OP, which is equal to OQ। OP is equal to OQ। Okay, so this is the relation that we have given that। Now we have to prove that it is an equivalence relation। So for the equivalence relation, let me start from the reflexive, symmetric and transitive। तो reflexive में क्या करना है, P and P, तो यहाँ पे Q is replaced by P, so it is OP is equal to OP, which is always true, which is always true। Okay, so we can say that P comma P is belongs to R for every P belongs to capital A। Now for symmetric, symmetric में क्या करेंगे, consider PQ belongs to R और आपको लाना क्या है, QP। PQ के लिए क्या होगा, OP is equal to OQ, और QP के लिए क्या होगा, पहले इसको रिवर्स लिखते हैं, OQ is equal to OP। So we can say that QP belongs to R। So therefore R is what, R is symmetric relation। R is symmetric relation। Now for transitive के लिए क्या करना है, to consider two conditions, PQ belongs to R and second one is QR belongs to R। Okay, PQ का मतलब क्या होगा, OP is equal to OQ। QR का मतलब क्या होगा, OQ is equal to OR। OP is equal to OQ, OQ is equal to OR, तो आपको क्या चाहिए, OP is equal to OR लिख सकते हैं
हमें पता है पी क्यू क्यू आर, तो हमें क्या लाना होगा, पी आर बिलोंग्स टू आर लाना होगा। पी आर में क्या होगा, ओपी इज इक्वल टू ओ आर होना चाहिए, तो हो गया। सो वी कैन से दैट पी आर बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर पी आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, दैट इज reflexive, PP belongs to R, यहाँ लिखना रहेगा R is reflexive relation. It is reflexive, symmetric, and transitive. So we can say that R is a equivalence relation, equivalence relation. ठीक है, R equivalence relation है, ऐसा प्रूव हो गया। Now आगे equivalence class फाइंड करना है, कौन सा देख लो। Further, show that the set of all points related to a point P, which is not origin, P is not equal to origin. एक point P दिया हुआ है जिसके related, okay, the point P is the circle passing through the P with origin as center. Okay. Further, once again मैं बोल रहा हूँ, further show that the set of all points, ये जो सेट ए दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे पॉइंट हो गए, उसमें से कुछ पॉइंट निकालने हैं which are related to point P which is not origin। तो एक पॉइंट P दिया हुआ है, P यानी कोई एक पॉइंट होगा से x and y, ओके। तो वो जो पॉइंट P के साथ रिलेटेड, पॉइंट P के साथ रिलेटेड यहाँ पे कौन है, Q है। व्हाट इज द रिलेशन, OP is equal to OQ, OP is equal to OQ। तो is the circle, the point related to point P is the circle passing through the point P and having center is origin, ओके। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है फर्दर। तो यहाँ पे जो सेट मैंने बोला था, सेट ए क्यू लिख रहा हूँ, वहां पे मैं ए पी लिखा था, यहाँ पे पी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पी यहाँ पे दिया हुआ है, पी एंड क्यू दिए हुए, दैट्स व्हाई वी राइट डाउन क्यू। ए क्यू इज इक्वल टू, आपको पॉइंट पी ऐसा कोई फाइंड करना है, ए क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर, सॉरी यहाँ पे आपको कहते हैं P के साथ रिलेटेड है तो P लिख देते हैं। चलो मैं P के साथ रिलेटेड पॉइंट फाइंड करने से सपोज P लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या था, X में कैपिटल X लिखा हूँ, पॉइंट है, वहाँ पे X का था रियल नंबर था, यहाँ पे X क्या है, कोई एक पॉइंट है, उससे कोऑर्डिनेट हो गया X एंड Y, दिस इज कैपिटल X वेयर X एंड P both are belongs to R, where X is also taken from the set A. What is set A? Point of all X Y plane, okay. So which is equal to X, where it is what, OX is equal to OP, OX is equal to OP, where X is also belongs to capital A, okay। अब ये जो फिक्स पॉइंट है, P के साथ मुझे रिलेटेड पॉइंट चाहिए, P के साथ रिलेटेड चाहिए, P इज अ फिक्स पॉइंट, उसका ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ही। तो सपोज OP इज इक्वल टू, सपोज OP is equal to K। So ऐसे पॉइंट निकालो जिसका OX is equal to क्या होगा, K where X belongs to A, okay। Suppose capital X is, suppose capital X is equal to X comma Y, capital X is what, X comma Y, कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट X and Y है। So here OX is equal to K, यानी अंडर रूट ऑफ x square plus y square is equal to K, that means x square plus y square is equal to K square। This is nothing but an equation, which is a equation of circle whose center is origin and passing through point P, okay।
बिकॉज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, क्योंकि ये डिस्टेंस टी स्क्वायर दिया हुआ है, वो क्या है, रेडियस हुई। तो रेडियस कैसे होती है, सेंटर से कोई भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये सर्कल उसी पॉइंट पी में से पास आउट होता होगा। तो हमें जो बताना था वही हो गया प्रूव। क्या प्रूव करना था कि इट इज शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो x y इन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हुए जो भी x y की वैल्यू होगी वो सब पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट हुआ x, वो सब पॉइंट एक साथ ले लो, तो वो क्या होगा, वो क्या है, पासिंग थ्रू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड हैविंग सेंटर ओरिजिन। x square plus y square is equal to k square is a circle passing through the point P and having center as origin. Okay, so this is the method to find out the equivalence class. Okay, chalo. Then next question, it is question number 12. Question number 12 is also too much simple question. What is given that? Question number 12 में क्या दिया हुआ है? So that the relation are defined on a set A of all triangles. Set A क्या है? Set of all triangles. ठीक है, उसके ऊपर रिलेशन R दिया हुआ है, कैपिटल R is equal to triangle 1 and triangle 2 T1 T2 such that T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. अब बोलो इस इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा हमें दिया हुआ है। चलिए T1 लिख देते हैं ना, जो लिखा हुआ है वही रखते हैं। कुछ बार कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। T1 is similar to T2. Now prove that it is a क्या प्रूव करना, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, T1 is similar to T1 लिख सकते हैं, similar to T1. Therefore what can we write down directly, T1 belongs to R, wherefore every T1 belongs to set A. कोई भी सेट ले लो, सेट में से कोई भी दो ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल खुद इटसेल्फ क्या होगा, सिमिलर ही होगा। सो देयरफॉर R is reflexive relation. First is complete reflexive, second one is T1 T2 belongs to R. उसका मतलब क्या होगा, T1 and T2 are similar, so that implies T2 and T1 are also similar. उसका मतलब क्या होगा, T2 T1 belongs to R, उसका मतलब R is symmetric. सर आपने तो गाड़ी पकड़ ली, फटाफट लिख रहे हो, इसमें क्या है, कुछ है तो नहीं, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही है, समझना तो कुछ है नहीं। T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, उसका मतलब क्या होगा, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. So we directly say that T1 is similar to T3. So that's why what happened, T1 and T3 के बीच में भी रिलेशन R कंटिन्यू हो गया। That's why it is T1 T3 is belongs to R. So we can say that T1 and T3 is also belongs to R. So T1 T3 belongs to R. So R is transitive. R is transitive relation. Okay, it is symmetric. Okay, here it is symmetric, reflexive, and transitive. Therefore, we can say that R is equivalence relation. Equivalence relation. Okay, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि T1 and T2
Consider three right-angled triangles T1. Consider the three right-angled triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13, and T3 with sides 6, 8, and 10. Which triangle along T1, T2, and T3 are related? So here triangle T1 with side, triangle T1 with sides क्या दिया हुआ है 3, 4, 5. Triangle T2 with sides 5, 12, and 13, and triangle T3 with sides 6, 8, and 10. तो which two are similar? तो सिमिलर में क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती है ना तो वो सेम नहीं होती, लेकिन उसका रेशियो कैसा होता है, सेम हो सकता है. तो यहाँ पे किस चीज का रेशियो सेम होगा, देखो तो ये 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, ये 6, 8, 10 है. यस, तो 6, 8, 10 में से कुछ कॉमन निकलता है. सपोज 2 कॉमन निकालो तो 3, 4, 5 हो जाएगा. तो दैट मींस व्हाट, फॉर द ट्रायंगल T1, फॉर द ट्रायंगल्स T1 and T3, it is 3 by 6 is equal to 4 by 8 is equal to 5 by 10 is equal to 1 by 2 is constant. Therefore, T1 and T3 are related to each other. Related to each other. T1, T2, T3 में से T1 and T3 के बीच में ये रिलेशन है, सिमिलर है. और T1, T2 सिमिलर ऐसा नहीं बोल सकते, T2, T3 सिमिलर ऐसा नहीं बोल सकते, सिर्फ T1 and T3 के लिए लिख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, that is question number 13. That's we have given, show that the relation are defined on a set of A for all polygon. A is nothing but the set of all polygons. Okay, जिसमें R क्या दिया हुआ है, P1, P2, such that P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. Is it simple to prove that it is equivalence? It is too much simple. So now क्या करेंगे, reflexive में P1 and P1 have same number of sides. Same number of sides. So we can say that this P1 is belongs to R. So R is a reflexive relation. R is a reflexive relation. Okay. Then second part is P1, P2 is belongs to R. उसका मतलब क्या होगा, P1 and P2 have same number of sides. Same number of sides. That implies we can say that P2 and P1 have same number of sides. So that implies we can say that P2, P1 is belongs to P2 and P1 is belongs to R. So R is symmetric. Next, it is P1, P2 belongs to R. P2, P3 belongs to R. That implies what can we say, that P1 and P2 have same number of sides. Number of sides, and P2, P3 के लिए भी सेम लिख सकते हैं. P2 and P3 have same number of sides. Okay, so that implies what happen, अगर P1 के पास साइड मान लो कि 5 साइड्स है तो P2 के साथ भी 5 होगी. P2 5 है तो P3 भी 5 ही होगा. So we can directly say that P1 and P3 have same number of sides. Same number of sides. उसका मतलब क्या हो गया, this is P1, P3 belongs to R. P1 and P3 belongs to R. So we can say that R is transitive relation. Okay.
So it is transitive, it is reflexive, it is symmetric, it is transitive. So we can say that R is a equivalence relation. R is a equivalence relation. जस्ट मिनट बच्चों, ये रफ कर दो. So therefore R is a equivalence relation. ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आगे क्या दिया हुआ है? What is the set of all element in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? So here the right angle triangle T, right angle triangle T with sides 3, 4 and 5 is given there, is given. तो इसके रिलेटेड आपको चाहिए. आपके पास रिलेशन क्या है? P1 एंड P2 में रिलेशन क्या है? दोनों की नंबर ऑफ साइड सेम होगी. तो यहाँ पे मुझे जो फाइंड करना है सेट AP. AP के बदले में क्या लिखूंगा? AT लिखूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे T यानी ट्राइंगल के रिलेटेड आपको कुछ फाइंड करना है ना. तो AP इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड करना है? X. कहां से लेंगे? X कौन सा लेंगे? जहां पे X और T के बीच में रिलेशन क्या होगा? R. और X ऑलवेज टेकन फ्रॉम द गिवन सेट A. उसका मतलब क्या होगा? X में क्या होगा? X and T have number of same number of sides. यानी T यानी क्या है? T यानी क्या है? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है. तो वो ट्रायंगल यानी T क्या है? 3 साइड्स वाला ट्रायंगल हुआ. तो X का भी क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा. X and T have the same number of side. T में कितनी साइड है? 3. तो X में भी कितनी साइड होगी? 3 साइड ही होगी. तो आपको सेट A में से क्या निकालना है? All the triangles. Once again, X and T के बीच में आपको X फाइंड करना है जो T के साथ रिलेटेड हो. T क्या है? ट्रायंगल है. तो X भी क्या होगा? ट्रायंगल ही होगा. So it is nothing but the set of all triangles. It is AT. T के साथ रिलेटेड हो वैसा क्या होगा? Set of all possible triangles are nothing but related to the right angle triangle T. Okay, sure. Now next question number 14. Okay, question number 14 में क्या दिया हुआ है? Let L be the set of all lines in xy plane. L is nothing but the all lines in xy plane. All the lines are 3 types of line. One is vertical, that's horizontal and slanting line. वर्टिकल लाइन जो होती है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंड जो स्लैंटिंग लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है ax plus by plus c इक्वल्स टू 0. लाइक दैट वी नो दैट. ओके, सो नाउ L relation R is defined on set L is what? R is equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. Is it an equivalence relation? ऐसा आपको प्रूव करना है. चलिए let's start. L1 that is L1 parallel to L1. लाइन खुद को खुद से पैरेलल है. मैं खड़ा हूँ तो मैं खुद से पैरेलल हूँ. पैरेलल में डिस्टेंस जनरली क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए. यहाँ पे दो लाइन सेम है. एक ही लाइन है, ये लाइन और उसके ऊपर ये लाइन. ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल बोल सकते हैं बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेकिन 0 है. 0 इज वैलिड नंबर तो है ना, इनफाइनाइट तो नहीं, अनडिफाइंड तो नहीं है, 0 है. इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल बोल सकते हैं. तो L1 is parallel to L1, so it is L1 belongs to R. For every L1 belongs to capital L. उसका मतलब R is a reflexive relation. R is reflexive relation.
नाउ सिमेट्रिक के लिए क्या लिखोगे, L1 L2 बिलोंग्स टू R। उसका मतलब क्या लिखोगे, L1 पैरेलल टू L2, so that implies we can say that L2 is parallel to L1, so that means we can say that L2 comma L1 is belongs to R, so therefore R is symmetric relation. Now for the transitive, दो conditions ले लेंगे, this is L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, उसका मतलब होगा L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, so we can say that L1 is parallel to L3. Okay, so that implies what can we say, that L1 L3 belongs to R, so R is transitive, so therefore R is equivalence relation. हो गया, चलिए अब आगे, find the set of all the lines related to line y is equal to 2x plus 4. So there is a one line is given, y is equal to 2x plus 4, so this is P, line P, that is y is equal to 2x plus 4. तो आपको एक सेट फाइंड करना है, सेट AP is equal to, ऐसी लाइन x निकालनी है या फिर लाइन L निकालनी है कि जो L P के साथ क्या होगी, related होगी, L and P belongs to R, where L is always taken from the set of L1 to यहाँ पे L1, तो L1 is always taken from the capital L. Okay, so this implies L1, आपको L1 find out करनी है, कौन सी, क्योंकि L1 is parallel to P, P यानी क्या होगी, y is equal to 2x plus 4. हेलो, पता चल रहा है, तो y is equal to 2x plus 4 को पैरेलल लाइन, तो मुझे पता है कि हम 11 स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आए कि कोई भी लाइन ax plus by plus c is equal to 0, तो उसको पैरेलल लाइन कौन सी होती है, उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है ax plus by plus k equal to 0, दिस इज द पैरेलल लाइन। और इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो कौन सी होती थी, x और y को इंटरचेंज करना है, bx minus ay plus k equal to 0. This is for perpendicular line and this is for the parallel line. हमें यहाँ पे कौन सी लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल लाइन कौन सी होगी, इसमें पैरेलल लाइंस, सो कौन सा आएगा, रिलेटेड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, दैट इज AP is equal to what, y is equal to 2x plus c होगा, 4 है ना, c 4 निकाल के c लिख दो, where c belongs to R, so this is the set of the lines which are parallel to given line y is equal to 2x plus 4. Okay, got it? चलो, now next topic, question number 15, जिसमें दो MCQ 15 16 दोनों MCQs हैं, that's we have to complete it. So first of all, what we have given in 15 number MCQ, that is let a relation R be defined on a set 1 2 3 and 4 and which is given by, relation दे दिया आपको and you have to identify it is a reflexive, symmetric और transitive है कि नहीं वो हमें देखना है सिर्फ। तो this is question number 15। on set A आपको दिया हुआ है, A set A दिया है 1 2 3 and 4 and relation R दिया हुआ है 1 2 2 2 then 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, choose the correct answer. Okay, तो now reflexive के लिए क्या होना चाहिए, yes same to same, 1 1 2 2 3 3 4 4, is it 1 1, yes, is it 2 2, yes, it is 3 3, yes, it is 4 4, yes, so it is a reflexive, it is a reflexive. Is it symmetric, yes or no, तो उसके लिए क्या लिखना है, 1 2 है 1 2 है 1 2, but 2 1 नहीं, that means it is not a symmetric, तो नहीं है। Now for the transitive, is it transitive or not, वो हमें देखना पड़ेगा, transitive है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए लव को देखना पड़ेगा, देख लो 1 2 2 2 AB
BC तो AC 1 2 है ही, 1 3 3 2 1 3 3 2 तो 1 2 वो भी है, 1 3 3 3 तो 1 3 भी है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, देखो हर एक के लिए होगा, ये 3 2 ये 2 2 तो ये 3 2 भी है ही, तो इट इज अ ट्रांजिटिव भी है, इट इज सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव है, ऐसा कौन कौन सा है? ए एंड बी है, बी भी है, सी गए चला गया क्योंकि उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक ना हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ओनली वन ऑप्शन इज देयर उसमें सिमेट्रिक नहीं है, दैट इज बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, in question number 16 what we have given that R on set n relation R is given that a comma b such that a is equal to b minus 2 where b is greater than 6. Okay, b is greater than 6, b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है। कंडीशन क्या है? a क्या होगा? a is equal to b minus 2, यानी ऐसा होगा b minus 2 comma b, उसमें b कैसा होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी ग्रेटर देन 6। ओके, तो पहले ऑप्शन में देख लो लास्ट ग्रेटर देन 6 हो, ऐसे कौन कौन से है? तो पहले वाला 2 4 नहीं है, 2 4 फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या दिया है? 2 4, वो तो गलत होगा, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 जो है वो b कौन सा चाहिए? मोर देन 6 चाहिए, यानी ये तो चला गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, कंडीशन क्या है? यहाँ पे जो नंबर है उससे कम 2 नंबर वाला आगे होना चाहिए। यहाँ पे सपोज मान लो 9 है, लास्ट में 9 है तो आगे क्या होना चाहिए? कंपल्सरी 7 होना चाहिए। सपोज लास्ट में आगे मान लो कि लास्ट में 11 है तो आगे क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? या फिर इन दोनों का देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है दोनों का? देखो तो 3 एंड 8, सेकंड बी में क्या है? 3 एंड 8 चलेगा, ये 8 है तो आगे 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट तो 6 होना चाहिए, नहीं है गया काम से। चलो सी में 6 8, यस ये होगा, 8 है तो आगे उससे 2 कम है, और लास्ट में क्या है? लास्ट में 8 एंड 7 वो तो हो ही नहीं सकता, तो दैट इज सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ओके, चलो तो बच्चों ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ द एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, दैट्स वी कंप्लीटेड। तो एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पता ना चला हो तो यू गिव मी द एनी कमेंट, एनी क्वेश्चंस, यू आस्क एनी क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आप लिख दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो भी नए नए और क्वेश्चंस है और जो एमसीक्यूज है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सॉल्व आउट कर देना उसके एमसीक्यूज और वगैरह जो कुछ भी इसके रिलेटेड, जो 1.1 रिलेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आउट ऑफ टेक्स्ट बुक के जो भी होंगे वो मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप देख लेना, सॉल्व कर देना, और कोई डाउट हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।